So, come to our Abhidhamma. We are discussing the beautiful mental factors. That's what we will start. So, did we do the exercise of noting down the factors, mind states sometimes? मैं एक्चुअली आपका पिछले वाला में सुन रहा था। अरे तुम थे नहीं पिछले बार। हाँ, I was a little taken aback by this thing that you can have pleasant feelings in the with roots that are global based. Yeah, both. वही सुधाकर ने वही कमेंट किया था। स्टार्टिंग जो था सुधाकर also commented कि ये क्या हो गया? Because we normally believe कि साधना करते करते प्रिय संवेदना आ रही हैं, प्रिय आ रही हैं, तो इसका मतलब हम we are getting in the right way and then progress का motion है. So it may or may not. It could be that we are getting greedy. Does that maybe give a concrete example of a mind state that is? जैसे लोग मूल चित्ता है कोई example दी गई छोटी सी ordinary example like it's a small boy he finds कि एक mango है दुकान पे and he gets greedy about it and feels खाऊंगा तो बहुत मजा आएगा and he rushes and steals it away. ठीक है लोग मूल चित्ता है unwholesome act हो रहा है. It is very pleasant because उसको मालूम है मजा आने वाला है खाने से. Ignorance. Yeah. Ignorance. मुझे मतलब आइडिया ही नहीं है कि ये अच्छी बात है कि बुरी बात है. पढ़ा हुआ है चाहे छोटे बच्चे को क्या पता है. होता है ना छोटा टॉडलर है 2-3 साल का आप शॉपिंग में ले जाओ जो उसको लगेगा वो उठा लेगा. उसको ये नहीं पता कि ये ठीक है कि गलत है. मुझे पसंद है तो मुझे लेना है और उसको उसने खाया हुआ है वो उसको पता है बड़ा मीठा है तो खा लिया. Having nice feelings doesn't have any compulsion of any kind. तो ये तो ignorance से हो गया. अब ये बताइए अगर इसमें है तो अगर पॉजिटिव है तो एक साधक है वो दान दे रहा है भिक्षु को सुबह पिंडपात में तो फुल नॉलेज की इट्स अ वेरी wholesome act with joy you'll great you'll feel extremely good. So when you are going with the bhikkhus I'm sure you must be feeling very good and you're helping somebody feel very good. So it's a positive state of mind. Unwholesome mood से unwholesome से low mood होगा. नहीं low mood होगा unwholesome. low mood है मूल तो low है. low mood चित्ता without ditthi. Let's discuss किया था ना 3 possibilities थे. low mood चित्ता with pleasant feelings or neutral feelings. That was one that was the kind of duality. Other was with prompted or unprompted. Third was with ditthi without ditthi. With wrong view without wrong. With wrong view होगा कि उसको लगता है कि चोरी करना तो कोई बुरी बात है ही नहीं. दूसरा है उसको आइडिया नहीं है मैं चोरी कर रहा हूँ. So pleasant feelings with wrong view भी हो सकता है. That's it. तो ignorance में तो हो ही सकता है. With लोग मूल चित्ता. लोग मूल चित्ता में pleasant with wrong view. Pleasant feelings भी हो सकती है. Pleasant feelings with no view. बच्चे वाले को no view है. No view. और अगर wrong view है तो it can lead to pleasant feelings or neutral feelings depending on the intensity of it. Feelings may be neutral or pleasant with low mood chitta. Low mood chitta से unpleasant feelings नहीं होने वाली. Unpleasant feelings सिर्फ दोष मोह चित्त से होने. लोग में सब ये तो pleasant हो गया neutral हो गया. इसलिए कहा था ना कि जो 89 mind states आगे summary में discuss that only 2 of them have unpleasant feelings out of all the mind states. Only 2. Rest of them have either neutral or pleasant feelings. So be careful about pleasant feelings.
So you get these small hints, but they are startling. Just because we don't we are trained to think in a particular manner. इसका क्या implication है कि सिर्फ दो में अंदर लाइफ में इतनी सारी प्लेजेंट फीलिंग्स होती हैं बट उनका रूट इसका मतलब ये नहीं है कि चित्त जो है होलसम हो. अनहोलसम चित्त में भी बहुत सारी प्लेजेंट फीलिंग्स होती हैं. न्यूट्रल फीलिंग भी हो सकती है. सर एक्चुअली जो डे टू डे हमारी एंटरटेनमेंट में प्लेजेंट होता है. मैंने कहा था ना कि वी शुड डू सम होमवर्क, देन इट बिकम्स ऑब्वियस ना. Do that homework. बीच में जरा देखें क्या हो रहा है. What is the state of the mind? Then you can figure out क्या कि अलग फीलिंग तो बड़ी अच्छी लग रही है लेकिन फीलिंग तो बहुत अच्छी लग रही है लेकिन हम दो मूल चित्त है. मतलब वो शोभना चित्त नहीं है. It's not a beautiful state. But of course there can be beautiful state of mind also and we can feel good. So Siddhakar has a question. Can Ditthi be equated to the lack of understanding of what Silas are or not? Ditthi is wrong view, meaning seeing permanency in what is impermanent, seeing self where there is no self, seeing joy and happiness in things which are root of unhappiness. Ditthi means non-recognition of three lakshanas, non-recognition of anicca, dukkha. इसको पहचान ही नहीं होता है तो व्यू टोटली रॉन्ग हो गया. कहाँ तक पहुँचे थे? इस स्लाइड में 83 पे थे. 3 पे थे, हम 84 पे जाने वाले थे. 83 कवर किया था सर. 82 सेंसिटिव चित्ता रूटलेस हो गया था. 83 कर रहे थे हम डिस्कस. ब्यूटीफुल चित्ता से. So there are wholesome 8 types in all. Feelings can be joy or neutral. It can be associated with knowledge or not associated, prompted or unprompted. 8 kinds of feelings. And corresponding to them there will be 8 kinds of resultants also. So these resultants can be rooted, so they are stronger than because we had seen the rootless resultants also earlier. So these are rooted results, and they are stronger. And what is interesting, I think, is thing which I noted is that in unwholesome chittas there can be one root or 2 roots. You remember? मोहा तो हमेशा ही होगा और ignorance साथ में होता है. मोहा तो हमेशा ही होगा. तो एक में ऐसा चित्त थे 2 जो सिर्फ मोह ही मोह था, उसमें कोई होश ही नहीं. बाकियों में चित्त में मोह था या लोभ था, या मोह था या दोष था. लोभ और दोष साथ साथ तो हो नहीं सकते. लेकिन जो होलसम चित्त है इसमें अलोभ और अदोष दोनों साथ साथ होंगे और अमोह भी है. तो 3 रूट्स हैं. सो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. सो जितने रूट्स होंगे, जैसे पेड़ के जितने रूट स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ही वो स्ट्रॉन्ग होगा चित्त. सो द ब्यूटीफुल चित्ता हैव ग्रेटर स्ट्रेंथ. They can have at least अलोभ और अदोष तो हमेशा ही साथ होंगे सर. हाँ, ब्यूटीफुल चित्ता में देखा था ना मेंटल फैक्टर्स में. क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि आपका अलोभ हो और साथ में दोष हो. हाँ, ऐसा हो सकता कैसे होगा? अलोभ और जो 19 हमने यूनिवर्सल मेंटल फैक्टर्स देखे थे उसमें अलोभ और अदोष तो उसी के पार्ट थे ना. अमोह वाज हैपनिंग, इट मे और मे नॉट बी देयर. तो उस सेंस में वो 19 जो थे, सो दैट गिव्स अस बैकग्राउंड. और यही सारे चित्र जो अरहंत के केस में भी होंगे, बट देयर विल बी फंक्शन एग्जैक्टली सेम थिंग्स, सेम डाइकोटोमाइजेशन. सो देयर विल बी फंक्शनल चित्त. सो दे नॉट प्रोड्यूस एनी धम्मा. So these are the sensorial beautiful chittas. Then we have others, jhanic states. So there are 15 fine material, मतलब रूप वचर चित्ता कहा जाता है. रूप मतलब रूप लोक से, रूप ब्रह्म लोक जो है. रूप वचर चित्त मतलब जो रूप, those chittas which are normally found in people who are residing in रूप Brahma, but they can also be experienced by human beings and people in other lokas if they practice jhanas. That is the meaning. And interestingly, in
Abhidhamma, they say 5 jhanas, not 4. So, जैसे if you remember in Cittas we read Vitakka, Vichara, then Piti, Sukha, Ekagrata. So उसमें पहले ध्यान में वितर्क विचार दोनों है, दूसरे ध्यान में वितर्क विचार दोनों ही खत्म हो गए. So Abhidhamma has done away with it. It says it should be one by one. So if you see the next slide, in the first jhana all the 5 are present. Vitakka, Vichara, Priti, Sukha, Ekagrata. In second jhana only Vitakka is absent. In third jhana Vitakka, Vichara are absent. In the fourth jhana Vitakka, Vichara, joy are absent. In the fifth jhana all the 4 are absent, and in addition to the Ekagrata there is equanimity. So this is how the Rupa jhanas have been identified in Abhidhamma. So they made it more systematic and said इस तरह से भी states होती हैं. So they put it like that. So there are these 5 jhanas, and therefore if you go back there will be 5 corresponding 5 Rupa jhana. There will be wholesome Cittas, then there will be Vipak Cittas, the result of them in the next life, and functional Cittas corresponding to the Arhats. The Arhats can also be practiced these jhanas. If they practice these jhanas, then they will be finding functional Rupa Cittas. So which means they don't produce any impact on them in the sense of karmic effect. नहीं. इस तरह से 5 या 15 फाइन रूप विचार चित्ता होगा. ये जो प्रीति है ना, प्रीति और सुख, ये जब नहीं रहेंगे तो होलसम चित्त होगा ही नहीं. प्रीति सुख नहीं है तो फिर वो ध्यान नहीं हो सकता. तो दरअसल लास्ट वाले में तो गायब हो गए. हाँ, उसमें इक्वानिमिटी भी आ गया ना. फर्स्ट जो वो क्या करेंगे एकाग्रता, दैट इज अ स्टेट ऑफ प्रीति, मतलब फीलिंग ऑफ थ्रिल, ठीक है ना, जॉय. और सुख का मतलब कि उसकी एक तो मेंटल फीलिंग है और एक है फिजिकल फीलिंग. मतलब इसकी अनुभूति नहीं होगी. होगी ना कुछ जिससे. हाँ, फोर्थ में नहीं. फोर्थ में प्रीति नहीं होगी, सिर्फ सुख रहेगा. फिफ्थ में सुख भी नहीं रहेगा, सिर्फ एकाग्रता. ग्रॉस लेवल पे वितर्क, मतलब फर्स्ट ध्यान तो सबका ही हो रहा है. इसका मतलब जब हम सब लोग 2-4 मिनट चित्त को एकाग्र कर पाते हैं, 1-2 मिनट भी, तो इसका मतलब फर्स्ट ध्यान में है. वितर्क विचार तो होता ही रहता है, थोड़ा बहुत चलता है. Then when the vitakka is gone, then you are in second jhana. Second jhana ko, strictly speaking, you will be surprised, it is second jhana which is said to be noble silence. If a person is experiencing second jhana, then he sees he is experiencing noble silence. He is practicing noble silence, because vitark vichar dono समाप्त हो गए. Not only is he not speaking, his mind is also not speaking. So second में तो विचार है, तो थर्ड में नहीं है. थर्ड, इसमें थर्ड में, उसमें सुत्ता में सेकंड. हाँ, सुत्ता में तो दोनों इकट्ठे खत्म होते हैं. सुत्ता में तो सेकंड में दोनों इकट्ठे भगवान कहते हैं ना कि नहीं. तो इस तरह से उन्होंने उसको सिस्टमेटाइज कर दिया. And then we go to the even higher level. Sudhakar has a question. So when nimitta arises, can it arise in first, second, or later? It would arise. It is those are the signs of increased concentration. जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती जाती है, so निमित्ता arise. निमित्ता मतलब जैसे आप ध्यान कर रहे हैं तो काफी कंसंट्रेशन कर रहे हैं, तो कुछ अच्छा आंख में साइन आ जाएगा कि कोई लाइट दिख जाएगी या कुछ हल्का सा, कोई कई बार किसी को कोई चैत्र दिख जाएगा, लाइट दिख जाएगी. आप उसी पे कंसंट्रेट करो. ध्यान के लिए कहा जाता है निमित्त पे कंसंट्रेट करो फॉर लॉन्ग टाइम, तो मन उसमें डूब जाता है, समाहित हो जाता है. तो अच्छा होता है अगर उसमें. हाँ, अगर ध्यान करने हैं तो उसके लिए तो ठीक है, वन पॉइंटेडनेस के लिए that you have to do that. So that's what the people who practice dhyanas, they advise कि how to handle निमित्ता. तो उसके प्रॉपर उन्होंने मेथोडोलॉजी बनाई हुई है कि आप कैसे उसको हैंडल करें. हाउ टू काइंड ऑफ, क्योंकि कई बार निमित्त आता है और चला जाता है, कई बार लंबे समय तक रहता है.
So depending on how you handle it. जो वो आता जाता तो चित्त का एकाग्रता करता चित्त एकाग्र रहा, फिर निकल कम हो गया, तो कितनी देर रहेगा एकाग्रता, कम हो जाती है ना। या तो उसका उसी के ऊपर कंसंट्रेट करें कम से कम लंबे समय तक, तो फिर उसकी एकाग्रता बढ़ सकती है। दिस इज व्हाट इज, इतना तो एक्सपीरियंस में आ जाता है, उससे आगे what is your experience with these limits? आते रहते हैं, बट हम लोग तो we used to ignore it ना। We used to we were giving instructions कि निमित्त आएंगे उनको इग्नोर करो। We used to practice our only on the sensations। उनको इग्नोर करने से हमें क्या, क्योंकि वो हम लोग को we were practicing varsana not dhyanas। हम लोग ध्यान प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे ना शिविरों में, we are practicing vipassana, we are not practicing dhyana। So if you have to practice dhyana, then ध्यान की प्रैक्टिस करने से क्या लाभ होगा? ये ना एकाग्रता आपको, अगर वैसे भी तो हम जब ध्यान करते हैं ये तो बहुत ज्यादा है, मतलब दोनों में कौन सा इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। दिस विल लीड टू rebirth in higher better realms, dhyana, and that will lead to freedom from psychological attachments। So there's a huge difference। This will not lead to liberation, this will lead to deep concentration, and if you practice which dhyana you practice, depending on that particular plane of रूप वचर लोका, रूप ब्रह्म लोका you reach। So देवलोक तो सामान्य ध्यान से भी, but for that you need a deeper concentration। So according to the scripture, तो भगवान बुद्ध वगैरह इन्होंने सारे ही किए थे, मतलब वो इसमें भी गए थे क्या? हाँ, उनमें तो ये करके छोड़ दिए, ये इसको ये करके देख लिया कि इससे भी ये करने के बावजूद भी मुक्ति नहीं हुई। In fact, first 6 years he did that only। First 6 years तो ही करते रहे, नहीं 6 नहीं, first 1 or 2 years, then he practiced austerities। अच्छा। That was the long drawn period। वो तो बता देते ना, उसमें जो आयत पढ़ा था ना हमने कि वो गए और within few weeks he learned, तो उसने कहा भाई अब तुम इधर आ जाओ, उसने नहीं अभी तो बात नहीं बनी। दूसरे के बाद गए, again within few weeks he became expert in that, he became इतना मेरे से जैसे हो गए, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, now you train my students। उसने कहा लेकिन वो तो ठीक है, but it's not leading to, I can see still अनुशय क्लेशास in the highest jhana। yes। So he then said कि इससे ज्यादा किसी को नहीं मालूम इस संसार में। वो कहते हैं उसने क्या नाम उद्धर का राम पुत्ता, इस संसार में कोई भी नहीं है जिसका इससे ज्यादा ध्यान है, अपने आप ही करना पड़ेगा। लेकिन लोग जो है ध्यान ज्यादा करते हैं, लिबरेशन की तो बहुत कम लोग जाना चाहते हैं। ये भी करना आसान थोड़ा ना, नहीं आसान नहीं है, पर मैंने देखा है ना कि लोग वो जो दूसरे ट्रेडिशन है ना, ये इम्पोर्टेंट है कि एकाग्रता को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। सर अमित क्वेश्चन, कैन फर्स्ट सेकंड एक्सेट्रा jhanas be seen as progress with right attitude? Progress with right attitude can be seen as progress? It is seen from the point of view of jhanas. From the point of view of jhanas, you can say yes, you are progressing to get higher and higher jhanas. So, from that, within that perspective, it is true. Within the perspective of jhanas. And then from rupa vachar loka, then you can do arupa brahma loka, those arupa jhanas, which are even more subtle. Actually, increasing subtlety will be the best way to describe. From gross, you go to more and more subtle, more and more subtle, more and more subtle. नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं। They are not necessary. There can be an arahant who may not practice jhanas at all. विचार तक नहीं होंगे। हाँ, वो तो उतनी कम उस लेवल तक तो होगा ही। फर्स्ट जाना बेसिक लेवल ऑफ कंसंट्रेशन तो होगा ही डेफिनेटली। फर्स्ट जाना तो आई थिंक ऑल ऑफ अस मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग इट व्हेन यू प्रैक्टिस इट, व्हेन यू प्रैक्टिस फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, यू गेट इजीली इनटू दैट स्टेट where mind gets comparatively calm with less distractions, and then established in a particular आलम्बन जो आपका कमर ठान जो भी दिया हुआ, सांस को देख रहे हैं तो मन टिक रहा है लंबे समय तक, इनके हिसाब से सेकंड वो है जब विचार भी बंद हो जाए। नहीं, थर्ड है। थर्ड है।
वितक और विचार में फर्क क्या? Vitak means initial application of the mind. The mind is just going to the breath. विचार means then it's sustained. Breath, मन भटक रहा है, फिर आप वापस ला रहे हैं, भटक रहा है, फिर वापस ला रहे हैं. और दूसरा हुआ कि तक वो भटकना काफी कम हो गया, तो वो सांस को देखे जा रहा है, तो देखे ही जा रहा है लंबे समय. That is when joy arises. So then, Amit has a question. These jhanas also seem to occur naturally when practicing vipassana state mindfulness. Is that? Yeah, that is true. First, second to आराम से आ जाता है. Joy arises, happiness arises. पीती तो आती है वो. Piti is experienced as a part of, it is a factor of enlightenment. So it is an experience as a part of Piti. Prashabdi हो जाती है, it gets calm and quiet, so that is quite near these states. So many of them are experienced during meditation. Normal vipassana also you can experience these states. But to hold on to them for a long time is comparatively difficult. Because when you experience Priti or Prashabdi, something will arise and disrupt it after some time. So it will not be sustained because our objective is not to sustain it. इसमें सस्टेन करते हैं Yeah, इसमें sustain करते हैं. उससे फिर क्या लाभ? Joy को sustain करते हैं, मन में एकाग्र हो जाता है ना, you get powers of concentration and then you can work in the direction of psychic powers, getting psychic powers. नहीं, लेकिन जैसे ध्यान करते हैं, जैसे शब्द की स्थिति आई थी पर जैसे आई तो मैं उसमें तो निकल जाएगी ना, मन gets happy, खुशी होने लगती है, टूट जाएगा फिर. नहीं, पर वो इससे कनेक्टेड होगा, मतलब अगर उसी में आप लगे रहोगे तो वो सिर्फ उसमें उस तरीके से नहीं हो पाएगा ना. जो हम when we are observing reality with anicca, anatta and dukkha, then the whole emphasis is on seeing that characteristic, not on fixing the mind on that. हमारी अगर हम ठीक से ध्यान कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य ये है, ये जानने का कि सब अनित्य है. जब प्रशब्द भी आ रही है तो देख रहे हैं अनित्य है भाई. So then the prajna begins to arise and latent defilements begin to come. उस स्टेट में जो उसके प्रति जो हमने राग ज्यादा किया है, प्रशब्द की स्टेट के प्रति जो राग जगाया है, वो सामने खड़ा होकर डिस्टर्ब हो गया. So then the mind will get distracted. तो फिर वो then it will break down and will come to the state of. ये जो है ये तो दूसरी तरह से करेंगे ना. ध्यान जब करेंगे तो जो निमित्त होगा उसको पकड़ के mind will be absorbed in that. होगा ना इसमें तो. हाँ, तो इसमें वो they are not trying to do anicca. You don't then think about anicca. Anicca तो disruptive होगा. You're not thinking. अगर आप अनिच्चा की तरफ और अनित्ता की तरफ ध्यान नहीं आए तो ध्यान टूट जाएगा. फिर तो टूट जाएगा because आपके वो उठेंगे ना पुराने संस्कार. Arise and disrupt it. Till such time as completely free and have an experience of unconditioned, then it's a different issue. So just as we had 5 Arup jhanas and 15 states, similarly there are 4 Arup jhanas and 12 states corresponding to them. Wholesome, resultant and functional. I think we are now used to this understanding. Those which are experienced in the Aniloka, then the result of that. क्या 4 states हैं? 4 jhana, Arup jhana है ना, जो we are told ना, आकाश के ऊपर ध्यान करेंगे, then infinite consciousness, infinite there's nothingness, emptiness, then on there's no sangya, or sangya is not there, sangya is finished. So उसका है ना आकाशंच आयतन विज्ञान आयतन अकिंच आयतन ध्यान नैव संज्ञाना संज्ञायते. These are the 4 objects of absorption. So this is an absorption meditation. अभी तक 4 तक तो वही कर रहे थे, वितर्क विचार, you came up to ekagrata and upekha. Now these are all seem to be gross. This also seem to be gross. So you then contemplate on आकाश. आकाश क्या है तो इसका वो तो है नहीं. So when you say infinite
So you extend the mind to the infinite levels. इस तरह से 4 चित्त बताए गए हैं। तो ये चारों चित्त जो है उनके भी वही उसी तरह से होलसम होगा या रिजल्टेंट होगा या फंक्शनल होगा। सब जब अनंत करेगा तो वो फंक्शनल लेवल पे, if he practices these jhana, he will be in that level of balance. जो अनंत है वो भी ध्यान प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, कर सकते हैं, भगवान तो करते ही थे। नहीं, पर फिर आप करो ना कि उससे वो मुक्ति का अनंत हो गए ना, मुक्त हो गए ना, उसके बाद देन दे प्रैक्टिस jhanas फॉर प्लेजेंट अबाइडिंग, सुख से जीने के लिए। भगवान को ध्यान करते थे ना। सो व्हाई डू प्रैक्टिस jhanas? ध्यान क्यों करते हो? सो दैट है प्लेजेंट अबाइडिंग। दिन भर इतना शरीर थक जाता है, so मेक इट। जब स्टेज पे पहुंचोगे तो शरीर भी कांपेगा। शरीर का तो अपना ही रूप है, शरीर का अपना शरीर। मन जब इतना हमारा निकल गया सब चीजों से, ऐसे थोड़ा शरीर अगर मन सब अगर ऐसा होता तो आनंद मरते ही नहीं। मरने की बात अलग है, एक ही बात है ना, शरीर क्लिष्ट हो रहा है ना, बूढ़ा तो हो ही रहा है ना, बूढ़ा तो हो ही रहा है ना शरीर। और जब आप इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों से, you get tired of speaking, explaining. It can be tiresome. Even Buddha says so in some discourses. Na? For example, Bhaiya Sutta में कहते हैं ना, he didn't ask too many questions. फटाफट काम हो गया। He was a very good disciple. He didn't bother him with too many questions. So कई जगह there are many discourses where he says, I'm feeling tired and when he lies down एक बार कि मेरी बैक में एक हो रहा है, just to show the people, otherwise he could have easily got over it. What is the big deal? हम लोग भी अपने विल पावर से पेन को देख पाते हैं, तो Buddha not do it, but to show that तुम अपने आप को, you don't try to pose yourself and run away from the realities. Okay, पेन हो रहा है। There is a sutta I remember कि Sariputta, my back is aching very much. I lie down and you continue. Must be having so many reasons for doing so. To tell people that Sariputta is equally good, to tell them that it is okay to have pain. ऐसा नहीं है कि पेन है तो तुम बहुत नीचे हो गए, पेन नहीं है तो don't try to kind of make your progress dependent on the feelings which you get. Normally ये रहता है ना, you expect that a Buddha will not have painful feelings at all. जिसे रामकृष्ण परमहंस का कहते हैं किसकी क्या प्रॉब्लम थी शरीर की, कैंसर हो गया था। हाँ, पर उनको अब आप नहीं बताया शरीर में he was crying, weeping. He was crying and weeping in pain, and crying to mother, ये क्या कर दिया तुमने मेरे को, इतना दर्द हो रही है, cannot tolerate it. And then he got a feeling, I cannot even eat food. So he got a feeling, oh, I am eating through others' mouths. That kind of a thought arose in him. So these are all ways of this. I think pain नहीं है। कैसे भगवान बुद्ध के केस में आपको कहते कई बार तो नहीं उसमें मतलब इतनी वो आ जाती कि दर्द महसूस नहीं होता है, शारीरिक दर्द तो होगा पर आपको भी क्षमता आ जाएगी कि आप उससे मन को बेचैन नहीं होने दें। इसमें भी था ना भी सुत्ता पड़ा हमने, even if my body dries up, even if my blood dries up, but the tranquility of my mind will not be disturbed. That is अब भगवान बुद्ध को जब उससे देवदत्त ने पत्थर फेंका और खून आया तो उसमें पेन तो हुआ ही ना। जीव का कहते हैं ना, so much pain, bore it equanimously, it was bleeding, and then जीव went and got and applied some medicine जो कुछ करना। But of course the Buddha has tremendous powers. He can, if he wants, he can just transform this. If he wants, he can trade. He will say, I will live for money. But he didn't do it. He gave a chance to Ananda. But he didn't do it. He don't want to create a picture that fully enlightened, he will not follow the laws of the nature. So that's so you see, at least my respect for Buddha became even more when I read these suttas. That he remained like a human being. Pain hai to hai, theek hai. That's all right. You don't have to make, because normally it's perception रहता है ना, बुद्ध है तो अगर अनंत हो जाएंगे तो आपको पेन नहीं होगा, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आपको ये नहीं होगा, अरे सार्थक करते हो फिर भी तुमको दर्द हो रहा है, फिर भी तुम बीमार हो गए, दिस काइंड ऑफ परसेप्शन हो जाता है ना, बनता है।
So he's trying to dispel that perception by his example. So शरीर में दिमाग तो होगा ही, लेकिन तो नेचुरल कोर्स ऑफ द लॉ है. साधकों को शुरू में ऐसा परसेप्शन रहता है ना कि मैं आई विल बी एबल टू, बीमारी ठीक हो जाएंगी, सारे लोग ठीक हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, तो उस काइंड ऑफ मिसपरसेप्शन. तो शरीर होगा, शरीर में कभी भी पेन रह सकता है. और भगवान बुद्ध के केस में बता तो रहा हूँ. हाँ, वो बता रहे, लेकिन पेन था तो उनको नहीं होगा कि देखो मुझे पेन है, अभी भी अनंत की स्थिति में तो चला जाना चाहिए. यही तो गलत फहमी है ना, यही तो मैं कह रहा हूँ. अच्छा, यही तो हम लोग गलत फहमी है. अच्छा, कि अरहंत हो जाएगा या श्रोतापन हो जाएगा तो पेन नहीं होगा, श्रोतापन हो जाएगा तो द्वेष नहीं जागेगा. ऐसा नहीं है. विशाखा श्रोतापन्न थी जब उसने शादी की. She had 20 children. When her child died, she cried and went to Buddha. Buddha didn't tell her, तुम श्रोतापन्न हो, तुम क्यों पे रही. ऐसा बिल्कुल नहीं कहा उसको. She explained to him, अच्छा तुमको एक मृत्यु हो गई, तुमको 1 लाख और दे देते बच्चे, कितनी बार होगी, ऐसे बन जाएगा उसको. So it's not like that. We have to understand things properly. वो आगे आएगा, लोकोत्तर में वो बात भी आएगी, तो भी देखेंगे. सुधाकर पार्डन माय हिंदी. अरहंत बनो सुख पाने के लिए, अरहंत बना तो सुख से जीने लगे. ये I mean these are the conventional words used to help people. तो ये कहीं कोटेड है? ऐसा नहीं, कोटेड नहीं है, पर जनरली कहा जाता है ना. अच्छा, सुख से जीना है तो अरहंत But in a way it's true, no? Because the mental suffering is मेंटल फीलिंग is out. लेकिन सुख जो है ना वो फिजिकल भी रिलेटेड रहता है ना. सुख से वो फीलिंग रहती है ना, फिजिकल फीलिंग विल बी प्लेजेंट. सो दिस इज बेसिकली दिस इज काइंड ऑफ वो रहती है एम्बिग्यूटी. हाँ, जब हम कहते हैं क्योंकि हम दोनों चीजों को हमेशा मिक्स करके देख पाते हैं, हम उनको अलग नहीं देख पाते हैं. कौन सा the natural progression of the conditioned world is and what we are creating on top of it. वो जो उपादान वाली क्रेविंग तो होगी सर, उपादान इज द प्रॉब्लम. सुख का फीलिंग होगी. ऐसे प्रीति और सुख का एग्जांपल दिया जाता है ना, कि एक अच्छा एक उदाहरण समझने के लिए, कि एक आदमी ट्रैवलर है, बहुत परेशान है और रेगिस्तान में चल रहा है, उसको दूर से दिखाई दे रहा है पानी है, तो उसको देखते ही उसमें थ्रिल आ गया, अरे पानी मिलने वाला है. सो ही गेट्स थ्रिल्ड एंड जॉयफुल. So that is preeti. Then he goes there and takes bath. That is gives him sukha. So that is the way it is explained. But it does not mean that one person will be always in physical joy, physical pain नहीं होगा. ऐसा नहीं. पर जब हम कहते हैं कि suffering, mental suffering, mental और physical suffering. Physical suffering तो होते ही रहेगी. उसका कोई, तो शरीर का धर्म ही है कि ये समाप्त होते ही रहेगा. Suffering कहाँ रहेगा? अगर आप साधना कर रहे हो, suffering is not meant physical. Suffering, physical is pain. So the difference between pain and suffering. See, there's a difference. Pain. There can be pain, fine. There is pain and you are suffering for that. No, why should you suffer? Why should I suffer? जब मैं हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है, I was not suffering even this much. अब मैं देखते रहता था हार्ट को, कभी इधर हो रहा है, कभी इधर हो रहा है. पेन है तो पेन से सफरिंग तो आएगी. बता दो रहा हूँ, एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ ना आपको. कितना एक्यूट डिस्ट्रेस हो सकता था कि हार्ट बीट कभी 25 हो रही है, कभी 125 हो रही है. तो मैं देखता रहता था उसकी और ऑसिलोस्कोप की, और क्या हो रहा है. ठीक है, मैं सेड ठीक है, इट्स ओके. एंड जब माय ब्रदर केम एंड ही रिब्यूट मी, क्या है भाई तू इतना केयर करता है, देख ले, और मैं खाता पीता रहता हूँ, ऐश कर रहा हूँ. तो मुझे हंसी आई. मैंने कहा यार तू यहाँ पे मेरे को डांटने आया क्या? So you can be in that state. So it is within experience, sir. ऐसा नहीं है. I remember जब वो फेल्सीपेरिया मलेरिया हुआ था, आपको याद है, मैं ऐसे हो रहा था मुझे, बिकॉज जो वो शिवरिंग होती थी, तो बेड जो है वो ठक 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 करने लगता, इतनी ज्यादा शिवरिंग होती थी. तो पहले तो कुछ एक आध बार तो डरा पे मिल गया, इसी को देख लो ना, अच्छा है, एंजॉयमेंट हो रही है. बट ये रहता है साथ वाला बेचारा, 2 बेड तो 2 में था ना, 2 बेड हॉस्पिटल में 2 वाला था. बेड यूज्ड टू ऐसे एंड व्हाई कुड आई हैंडल इट, बिकॉज उससे पहले 30 डे कोर्स में जब मैं वहां गया था धम्मगिरी में, वहां पे भी ऐसी फीलिंग होती, क्योंकि बॉडी इतनी ज्यादा वाइब्रेट कर रही थी कि मैं लेटता था तो कट कट मैंने देखा है क्या हो रहा है. मैं समझा साथ वाले के, क्योंकि वो तो उन दिनों उसमें रहते थे डॉर्मेट्री में, साथ वाले के हो रहा होगा, ये नहीं ख्याल कि मेरे ही हो रहा है.
Then I realized कि तो मेरी बेड में हो रही है ठक ठक ठक, क्योंकि मैं उठ जाता हूँ तो बंद हो जाती है और बैठ लेटता हूँ तो फिर हो जाती है. So I could see the body was vibrating so hugely that it was affecting the bed. So once you get used to it, that ठीक है, so right. So it's not necessary that one should have painful feelings and then suffer. It's not necessary. It is within my experience. So leave aside the experience of people who meditate better. People really hate me. So that is the difference basically between pain and suffering. Yes, but ये तो we can easily see at least that some people are a lot more equanimous in pain than the others. So it's conventional also. Within the domain. किसी को हल्का सा pinch हो जाए और वो उसका पहाड़ बना लेगा. And some people may be going through a lot of pain but they're still equanimous. So pain and suffering में फर्क होता है. Pain तो रहेगा but आप उसका कितना वो बना रहे हो. पहाड़ बना रहे हो. हाँ. मन में. Many people divert their mind. Many people divert their mind. ठीक है यार, दर्द है जो अपना काम करते रहो. So is this coming also from the Hindu thing? ये जो भी श्लोकन लिखा है. This notion के ऐसे हो जाए तो we rise above everything. मतलब इतनी डिटेल में मैंने जो उपनिषद पढ़े हैं जितने भी थोड़े बहुत, उनमें इतनी डिटेल में डिस्टिंक्शन बिटवीन पेन एंड सफरिंग इतना डिटेल में नहीं गया, बिकॉज दे आर मोर इन अफॉरेस्टिक है ना. उपनिषद में जो है दे आर मोर स्पेल्ड आउट द एज अ मेटाफिजिकल ट्रुथ, द नेचर ऑफ रियलिटी, nature of Atman, Brahman. So that kind of discussion is there, but I don't find such minute differentiation there. I was just thinking that maybe from that only these notions of Atma, etc., these things may be, these notions may be arising. जहाँ तक मुझे याद है अभी जितने भी उपनिषदों का, no, the statements are very powerful statements, For example, इसमें आता है छांदोग्य में किसमें आता है, not what is seen, but through which eye sees, know that to be the Brahman. Similarly for hearing and all that. So it's quite near the what we are saying, quite near. That is, what you are seeing, know that, but that through which the eye sees is basically consciousness. So know that to be the Brahman. So the consciousness which is there in you is also there in the world outside. So those, that kind of transcendental understanding is found in the. So मुझे कई बार अजान समय तो ना बहुत ज़्यादा उस तरफ भी लगते हैं. Because he focuses a lot on consciousness and he says unconditioned, unborn, and universal. वो भी भगवान का ही सिक्का है, उदाहरण है, because there is unconditioned. Had it not been there, there would have been no escape from the condition. So that's a very powerful saying there. So we'll, I think, have a chance to discuss that also in the study. So then we can go to something beyond us totally, Supramundane Cittas, Lokotar Citta. So Lokotar means there are 4 wholesome and 4 resultant. Wholesome का मतलब मग्ग वाला जो स्टेट है, कहा जाता है ना, श्रोतापत्ति मग्ग चित्त, श्रोतापत्ति मग्ग चित्त, फिर आएगा श्रोतापत्ति फल चित्त, तो फल वाले रिजल्टेंट हो गए. इस तरह से 4 वो हो गए और 4 उसके. सर इसमें वो वाला क्यों नहीं है सर? क्या फंक्शनल? इसमें नहीं है. Lokotar state में फंक्शन नहीं हो सकता. When you are in a state of supramundane, which is transcendent from the low,
उसमें फंक्शन कहाँ करोगे? सो जो मग्न चित्त है, जो होलसम है, तो एक ही बार जिंदगी में आप एक्सपीरियंस करेंगे. श्रोतापत्ति मग्न चित्त जो है एक बार एक्सपीरियंस करेंगे जिंदगी में, बिकॉज उससे नेक्स्ट चित्त जो है फल आ गया. अब जो श्रोतापत्ति का फल मिल गया तो फिर आप मग्न का चित्त एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते. Then you will only experience that. So this way these are, and then there is a given explanation कि उसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा. तो श्रोतापत्ति मग्न चित्त के आने के समय पे सक्काय दिट्ठी, शीलवत, परामर्श, विचिकित्सा, वो तो स्टडी those three will be there out. Then in Sakdagami, Kamachanda, Vyapada will be reduced, not out but reduced. Then Anagami में the Kamachanda and Vyapada eliminated. And in Arhant, the desire for Rupa Vichara Loka, Rupa Vichara Loka, Mana, Uddicca, Moha, all finished. So restlessness continues till the last stage. Ignorance continues till the last stage. Because ignorance के कारण ही मान जाता है, conceit. So there is a distinction you can see between Sakkaya Ditthi and conceit. Sakkaya Ditthi is treating 5 skandhas as me. You got clear कि 5 skandhas me नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो है भाई. ऐसा लगता है. That doesn't go away till there is a person becomes completely liberated. So this is the way these chittas are explained. 8 more chittas. And these 8 chittas can be converted into 40. How? Depending on which jhana the meditator experiences at the time of his transition, at the time of entry the stream, or at the time of anagami or sakdagami or arhant. तो उन 5 ध्यान है, 5 कर सकता था वो, तो 5 into 8 makes it 40 possibilities. So that's how those additional 32 states of mind come. And the so 8 यहाँ तो 9 किए हुए थे, 5 plus 4 ही है ना. लोकोत्तर चित्त तो 8 है ना. ध्यान तो 5 थे ना सर. हाँ, ध्यान 5 थे ना. ये तो वो है ना लोकोत्तर चित्त में. तो लोकोत्तर चित्त में तो श्रोतापन, सकदागामी, अनागामी, अरहंत 4 है ना. 4 स्टेट्स. और वहाँ 8 नहीं है सर, वहाँ 9 नहीं है. इसमें ये तो 4 है सर, बट जो ये 8 है ना. 4 और 4 8 ये है. ओके, राइट. ये 8 है और उनके 5 थे. तो जैसे श्रोतापन है मान लो, ठीक है ना. तो श्रोतापन कैन डू, जैसे मैं नेक्स्ट में लिख भी रखा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड देखोगे तो. सो इट कुड बी प्रथम ध्यान श्रोतापत्ति, द्वितीय ध्यान श्रोतापत्ति, तृतीय ध्यान श्रोतापत्ति, एंड सो ऑन. So there can be 5 kinds of Shrotapans, 5 kinds of Saktagami, 5 kinds of Anagami, 5 kinds of Arhants. So this makes it 40 states of mind. So the Abhidhamma Sangatha says, a very beautiful statement. Therefore the wise divide the Chittas into 121 kinds. Mostly तो 89 से ही काम चल जाएगा, लेकिन आप wise हैं तो 121 कहेंगे. So that's how the chittas are classified. Okay. So then I have added one meditation exercise. I added, just see next is to help understand the characteristics of consciousness, which is the pure awareness of object, and to realize the non-self nature of consciousness. In one of those so many books I found this, मैंने इसको copy कर दिया वहाँ से. So what does it say? You sit silently and don't pay attention to any object. Don't keep any object. Choiceless observation. And something will happen. Either a sound or a feeling or a bodily sensation or a thought will arise. And you just observe what's happening. So you'll become immediately aware of it. You don't have to put effort. And you decide that I will not put effort. If you want to experience anatta, you say, no, I will not put any effort in knowing anything. I'll just sit. And the mind will keep on knowing. Sound it will know, it will know thought, it will know feeling, it will know this. So various consciousnesses are arising on their own. So that's how we say, you can notice that the thoughts keep on arising, the mind keeps on getting into awareness without your intervention. नहीं वो तो सर ने वैसे भी बहुत बताया कि माइंड भाग जाता है. हम उसको कहते हैं भाग जाता है. तो एक्चुअली इट इज गॉट इनटू थिंकिंग मोड ना. मनोविज्ञान जाग गया है. नहीं सर, वो उसके अलावा भी बहुत एक्सपीरियंशियल
उसमें होता है कि अभी आप जैसे टीवी देख रहे हैं तो माइंड उसमें ड्रॉप हो गया। देखिए जैसे लेट अस जस्ट सिट फॉर अ मिनट नाउ, आउट ऑफ प्रैक्टिस हमारा अटेंशन बॉडी में चला जाता है, जस्ट आउट ऑफ प्रैक्टिस यू बिगिन टू फील समथिंग, देन सडनली यू बिगिन टू हियर साउंड फॉर अ मोमेंट, देन अगेन यू गो टू दिस, सो द माइंड इज becoming aware on its own. The consciousness is arising on its own. That's the point being made. Because consciousness के प्रति सबसे ज्यादा अटैचमेंट यही रहती है ना, मैं जानने वाला हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। तो कहना ऐसा कुछ नहीं है, चुपचाप बैठ जा, पता चल जाएगा कि अपने आप सुन रहा है भाई, तुम कहाँ हो बीच में, तुम क्या लो, कोशिश कर लो नहीं सुनना, मुझे करके देख लो। नहीं पर फिर वो तो बाधा है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो नहीं बात प्लीज जा रहा है तो हम वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वी आर डूइंग समथिंग एल्स। हम लोग एक ही तरह से ध्यान करेंगे ऐसा नहीं है ना। हम अब ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ कि अपने आप हो रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। इंक्वायरी ये है, ध्यान की करने के लिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसको हम समझना चाहते हैं। तो ये ना कि बटन ये हमारा वो सेंस में है ना कि जब हमने एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव बना लिया, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव दूसरा बना लिया, तब हमने ऑब्जेक्टिव बना लिया कि हमको तो सांस पे ही रोकना है। Then I have made an object, intention. Now I say, okay, I deny the fact. Suppose I say I deny the fact that consciousness is arising on its own. It is anatta. I don't agree. Okay, you say I will not hear. Okay, try it out. Close your eyes and try it out. I will not hear. First thing will happen is you will hear. तो जो वो बंदर वाली बात है। So you can verify that. Whatever you decide not to experience, the next thing you'll experience is that one. So you notice that the consciousness is arising without your effort. So it becomes more, they are just ways of convincing us on experiential level that the objects will keep on coming to the mind on their own. And mind keeps on knowing each object. And you soon realize that the process goes on without any director behind the consciousness. So long as you do not react to the object but purely observe. जैसे ही react करोगे तो उसमें लौटो, तब तो तुम आ गए. The moment there is reaction, you have come in. Now you have reacted and you got into it. I as a result. So some interesting comments, sir, on the Sudhakar saying this meditation exercise is equivalent to Google's attempt at self-driving car. Amit says चुपचाप बैठ जाओ, सब पता चल जाएगा. Sudhakar is working for Google, is it? I don't know, sir. I don't know where he is working. Sudhakar, you are involved in that Google, right? Oracle, sir, he says. Yeah, Oracle, आस-पास ही. So for who knows, they may also be developing. He will not tell us, no? Sudhakar says, my house is next to Google. अच्छा, ये बात है. अच्छा, चाय लेंगी या And he sees those self-driving cars there. चाय जो ग्रीन टी लेंगे या लिप्टन वाली? आपको तो आपको पता ही पूछना है. अंकल के लिए ग्रीन टी बनाना, हमारे लिए दूसरी And दो ग्रीन टी. Amit says, चुपचाप बैठ जाओ, सब पता चल जाएगा. Darsal quoted this. So now let's conclude it. What do we learn from all that? So that this section gets concluded. First, so I have written down some things. Maybe you can add, other friends can add. For us humans, we are mostly operating in sense sphere Cittas arise, except when we are experiencing dhyanas. It's quite obvious. Feeling associated with Vijnana are neutral, except in Kaya Vijnana, where the feelings can be pleasant or unpleasant, not neutral, depending on the nature of Citta. So, except in Kaya Vijnana means otherwise? Otherwise, if just pure observation, जो विपाक चित्त है, pure seeing, it's neutral feeling. So when we say कि मुझे अच्छा लग रहा है, इसका मतलब we reacted actually. And Kaya Vijnana means body. Body भी touch हो रहा है जैसे. So it will be either pleasant or unpleasant. It won't be neutral. So हमको neutral लगता है ना कि bodily feeling असुख दुख है, तो वो कहने की बात है कि हमको डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं. अदरवाइज इट कैन नॉट बी ऑफ दिस, इट कैन आइदर बी ऑफ दिस काइंड और दैट. दिस इज a difference which from our normal understanding. नॉर्मली हम शरीर में फीलिंग महसूस करते हैं तो कहते हैं उनको भाई प्लेजेंट होगी, अनप्लेजेंट होगी, न्यूट्रल होगी.
बिकॉज न्यूट्रल कई इतनी माइल्डली प्लेजेंट है, इतनी माइल्डली अनप्लेजेंट है कि पता ही नहीं चल पाता। चलो न्यूट्रल मान। जो विज्ञान आप कह रहे हैं ना, उसमें भी तो फीलिंग होगी, मतलब फीलिंग विज्ञान मतलब जब आप सिर्फ देख रहे हैं, जस्ट सीइंग, देखने में भी तो अच्छा बुरा लग सकता है। तो जैसे अच्छा बुरा लगता है उसका मतलब आपने रिएक्ट कर लिया। अच्छा, that's what we learn ना, that's how we learn from Abhidhamma। नहीं तो हमको ऐसे ही, हम तो उसमें रहते थे कि देख रहे हैं, हाँ अच्छा लग रहा है, इसका मतलब प्रिय फीलिंग हो रही है उसके कारण, बट दैट प्रिय फीलिंग इज एक्चुअली रिएक्शन, वी ऑलरेडी रिएक्टेड। प्योर ऑब्जर्वेशन, प्योर सीइंग, जैसे दिट्ठे दिट्ठे मत्तम भविष्यति, न्यूट्रल फीलिंग, नो फीलिंग, देन यू कैन रिएक्ट स्टिल आउट ऑफ संन्या। You seen a form, ये फूल अच्छा लग रहा है, so that will be not a vibhag chitta, that is a present chitta which you create, kushala or akushala, whatever it is. It depends. So in every sense domain, whether we see something, hear something, smell something, initial of the consciousness which arises, first state of awareness is pleasant feeling. Then depending on our evaluation and our sanya which is accompanying it, then there will be reaction. And then there will be, that is a vipak chitta. So when we see something or hear something, it is a vipak chitta, rootless. Then we create roots. I can create wholesome roots or unwholesome roots. I can say, this flower बहुत अच्छा है, I think I should give it to Bhante. So you create a wholesome feeling. नहीं ये मुझे उनको देना चाहिए, और नहीं ये तो अच्छा है, I think I should steal it out from here and go. You create an unwholesome feeling. So that's how the feeling, the mind states keep on happening. The first state, mind state of pure awareness is so difficult, so we are not even able to observe it. We immediately get into reactive mode. So we can be a mindful, okay, that's all right. रिएक्टिव मूड होगी तो अगर मान लो रिएक्ट कर दिया, इमीडिएटली आएंगे तो अनेक चीजें है, मतलब इस मामले में वो डिग्री ऑफ रिएक्शन कितना हुआ और उसके ऊपर आपने कैसे उसको रिस्पॉन्ड किया, दैट विल बी सब्सिक्वेंट चित्ता, एक के बाद एक राइज होते रहेगा ना। और सर अगर ऐसा हो कि जो क्लास किया है वो भंते को देने के लिए क्या, हाँ तो दोनों ही चीजें होगी ना, एक मोमेंट पे अनहोलसम चित्त हो गया, दूसरे मोमेंट पे होलसम चित्त हो गया, both the things will operate one by one, they keep on operating ना। So it's not that एक बार अनहोलसम हो गया तो हमेशा अनहोलसम बना रहेगा अगले एक घंटे के लिए, it can happen just next moment it can be। हमने दान दिया बड़े शुद्ध चित्त से, फिर ख्याल आ गया अरे यार ज्यादा दान दे दिया, कम देना चाहिए, हो गया अनहोलसम, हो गया ना अनहोलसम, सारा किया। एक क्षण तो हमने होलसम किया ना, और दूसरे क्या हम अनहोलसम हो गया, तीसरे का हम डाउट हो गया, पता नहीं सचमुच में अच्छा भिक्षु भी है कि नहीं, शीलवान है कि नहीं, फिर और डाउट हो, फिर और क्रिएट हो, दैट वे कि फिर मन में आया नहीं मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। सो माइंड कीप्स ऑन ऑपरेटिंग लाइक दैट ना, wholesome, unwholesome, wholesome, unwholesome. It keeps on operating like that. So when you become aware, mindful of this, then you can see कि क्या drama हो रहा है. Then you get ठीक है, you get disenchanted with the whole damn thing. ऐसा ही होता रहेगा, इसको जाने दो. Don't bother about it. This is how disenchantment arises. यार कितना कोशिश कर ले wholesome रहने की, होता नहीं. छोड़ दो ना, जाने दो. जैसे फूल है, फूल किसी को देने हैं, अच्छे लेंगे, चलो ये उनको दो, तो उसमें भी चित्त का वो गया। तो आपको देखना पड़ेगा ना, डिपेंड करता है, इट कैन बी होलसम, इट कैन बी अनहोलसम। आप जैसे कोई फूल आप किसी को देना चाहते हैं तो आप उसको फूल देंगे या कुछ देंगे, गिफ्ट तो देंगे और अच्छा लगेगा, मतलब ये अच्छा है देने के लिए, तो वो भी हमारे चित्त में भी विकार हो गया। नहीं जरूरी नहीं है ना। चित्त पे चेतना कैसी है, अगर चित्त की चेतना अच्छी है तो वो अच्छा हो गया। तभी तो भगवान को पठान में जो उन्हें सुनते हैं ना, वो उसको सुन के आदमी हिल जाता है। कुशल धर्मो कुशल से धर्म से हेतु बच्चे, ये क्या हो गया भाई, कहते हैं कुशल कर्म भी जो है अकुशल कर्म का हेतु बन सकता है, क्योंकि फिर उसमें उसी में उदाहरण देता है, वो दानम दित्वा, वो दान भी देते हैं, गरुण कृत्वा, फिर अपने को अहंकार बढ़ाता है। कुशल कर्म जो है कुशल कर्म का हेतु बन गया। So these are the ways which Abhidhamma teaches you, then you become very, very cognizant, and a time comes and you say, to hell with it, मैंने बहुत effort कर लिया, अब छोड़ दो, just leave the damn thing. Then you get out of the whole domain of effort and just be aware of the
play which is going on. Don't take it personally. ठीक है, कुशल जागे ठीक है, अकुशल जागे वो भी ठीक है. That's it. So disenchantment will arise like that. No? When you see disenchantment में फिर effort कम हो जाएगी. No, it depends. ना अन्य है कि नहीं. वही तो चीज है ना, जो होलसम एफर्ट. अभी वो कहते हैं ना कि होलसम चित्त में कन्या हो ना हो जरूरी नहीं है. दैट इज ए वेरी पावरफुल एनालिसिस जो हमने पढ़ी थी ना, याद है आपको? 19 यूनिवर्सल होलसम चित्तास, होलसम मेंटल फैक्टर्स. यूनिवर्सल में कन्या ही नहीं थी, तो बड़ा गड़बड़ हो गई. सो यू आर फोर्स्ड टू रीथिंक अबाउट इट. Then next was it. I already pointed out. Only 2 out of 89 chittas are accompanied by unpleasant feeling. Remaining 10 akushala chittas are accompanied by pleasant or neutral feeling. You should not get carried away by feelings, nature of feelings. Unpleasant feelings cannot accompany kushala chitta. Thus, on seeing people suffer, if you become sad and feel bad, it is akushala chitta. See, this is how analysis is done, na? Wise compassion, just listen fully. Wise compassion cannot arise with akushala chitta. So one should abandon sad, unhappy feelings and allow wise compassion to arise. Wise compassion तो आई से जब अंदर मन शुद्ध नहीं हुआ. हाँ नहीं, वो तो ट्रेनिंग की बात है, मन को ट्रेन करने की बात है ना. पहले तो जानना चाहिए ना. अगर हम जानते ही नहीं हैं कि भाई हम दूसरे के दुख को देख के दुखी हो रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है. हाँ, और ये भी समझ रहे हैं कि बहुत अच्छी बात, तो अच्छी चीज है, ऐसा तो होना ही चाहिए. होना ही चाहिए. मुझे किसी को दुखी देखो कन्वेंशनल लेवल पे ठीक है, हम कन्वेंशनल नहीं बात कर रहे हैं, हम अभिधम्मा की बात कर रहे हैं. एट द अल्टीमेट लेवल, एट द अल्टीमेट लेवल, इफ अ माइंड गेट्स अपसेट, इट कैन नॉट बी कुशला चित्ता. सो पीरियड फिनिश्ड. It does not mean that you don't become compassionate. It does not mean that you don't have loving kindness. But with the base of equanimity. Base of equanimity. क्या होना चाहिए? किसी को दुखी equanimity. नहीं, किसी को दुखी देख करके आप उसकी compassion. करुणा जागृत. करुणा का मतलब करुणा, और दूसरे को क्या कहते हैं, पिटी को क्या कहते हैं हिंदी में? इसको दया. किसी पर दया करना, उसमें वो अहम भाव आ जाता है. करुणा इज ए इनफाइनाइट मेंटल क्वालिटी. दया, दूसरे पे दया कर रहे हैं तो मैं तो सुखी हूँ, ये दुखी है, तो मुझे इसके लिए कुछ कर देना चाहिए. मैं का भाव जाग जाता है. सो देन, और दया करते हुए आदमी, अब आपका मन भी विचलित हो सकता है. हमारा मन विचलित ना हो तब कुशल चित्त होगा, तब आप कंपैशन को एक्टिवेट करने का पॉसिबिलिटी है. नहीं तो आउट ऑफ पिटी यू कैन डू समथिंग, बट देन योर माइंड इज अपसेट और कुशल हो गया. So the other thing, so empathy is a kushala chitta or sympathy. So empathy is a kushala chitta, and then he says sympathy. The compassion is a kushala chitta. So empathy और sympathy से कैसे relate करेंगे इसको? Empathy means you feel, you put yourself in the other's shoes. Sympathy will be you just trying to, तुम sympathize, pity. एक बहुत सुंदर सा एक कार्टून बनाया हुआ था, किसी ने, मैंने देखा था एक, उसमें मैं अपनी वर्कशॉप में दिखाया नहीं, मैंने खुद देखा, मुझे काफी अच्छा लगा. एक बंदा है, वो गड्ढे में गिर गया, तो दूसरा आता है कि तो वो वेरी सैड, केला खाओगे? केला खा लो. उसको निकालने का कोशिश नहीं कर रहा. केला खा लो, चाय पिला दो. The other person says, he goes inside and he's crying, he says, okay, मैं निकाल तो नहीं पा रहा. He goes inside and comforts him. Doesn't matter, we'll get help. We'll try to get something and find out. So he's empathizing with him, understanding his perspective. So that way, empathy without mind getting upset could be a wholesome thing. Finally, just 3 more points, which you already discussed, just a recapitulation. Moha is present in all akushala chittas. And there is a difference in the pleasant feeling that arises in lobha mula chitta and in kushala chitta. Now this is for us to experience. Difference in the present feeling means? मतलब फीलिंग जो प्लेजेंट है वो सारी एक जैसी नहीं है. प्लेजेंट लगती है, लेकिन जब लोभ मूल चित्त होगा तो उसका एक तरह का टोन होगा.
और जब कुशल मूल चित्त होगा तो उसका दूसरा टोन होगा. फिर वन विल बी एसोसिएटेड विद एक्साइटमेंट, वन विल बी एसोसिएटेड विद एजिटेशन, अदर विल बी एसोसिएटेड विद कामनेस एंड काइंडनेस. दूसरे मेंटल फैक्टर भी साथ साथ प्रेजेंट होंगे ना. There will be other mental factors present. So those other mental factors will give a different flavor to that. And finally, which again I have mentioned it, but to consolidate our wholesome chittas can have 2 or 3 wholesome roots, while unwholesome chittas have 1 or 2 only. So there is a hope. There is no hope. एक भी गड़बड़ हो गया. There is a hope, na. Unwholesome chittas are less powerful. See, there's less roots. Wholesome chittas are greater roots. ऐसा क्यों है? ऐसा है. Also hope is like the wholesome और unwholesome chittas के नंबर भी बहुत वेरी है. हाँ. Wholesome chittas तो बहुत सारे हैं. हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो frequently आएंगे. तो मैं तो hope के लिए कह रहा था सर. हाँ. Statistics नहीं जरूरी है. क्योंकि उनमें 19 के 19 फैक्टर एक ही जगह आ गए ना, बंच हो गए. मेंटल फैक्टर्स बहुत बंचिंग है उसमें यूनिवर्सल 4 ही थे, इसमें 19 है. गुड सर, so stop here. So you have completed 2 of the Paramartha Dhammas, Chitta and Chetsika. Then we'll take up the third, Rupa, and then we'll take up the application. Of course, we have been putting application around, but then we'll take up the application in more detail, understanding what is going on in this world, हो क्या रहा है. अभी हम पठान की तरफ नहीं बढ़ेंगे. वो बहुत मुश्किल काम. वैसे ये इनके कॉम्बिनेशन इतने मुश्किल थे सर. एक्सरसाइज देते थे, मैं कई बार सोचता था कि अभी एनालाइज करें तो याद नहीं आते थे कि वो कौन कौन से. याद करने की जरूरत नहीं है. What I meant was just figure out what is going on. You could easily figure out, ये है, और हो सकता है और भी हो जो मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है. जो प्रोमिनेंट थे वो तो पता चल जाते थे ना. प्रोमिनेंट लोग जागा है कि प्रोमिनेंट दोष जागा है, प्रोमिनेंट जेनरॉसिटी जागी है. सो यू कैन बिकम अवेयर ऑफ इट. सो दिस वे बिकम एक हैबिट सी हो जाती है. देन यू कैन आइडेंटिफाई विद देम वेरी इजीली. वंस यू सी देम एज मेंटल फैक्टर्स एंड नॉट एज मी, देन यू डिसआइडेंटिफाई देम. So that itself is a sadhana. हट गए. Mere recognition is enough. Good sir. So is there any questions from our friends? Slacker is asking something from Satipatthana Sutta. He's typing it for the. Buddha does not mention Kushla Chitta in Satipatthana Sutta. Kushla Chitta, when this Chitta is Vitiraga, Vitadosha, they are Alobha, Alobha. Right. So Vitarag, Vita, they are those. Vitamoh. Moh. Vitamoh तो नहीं है वहाँ पे. So he's saying Nivarnas are akushala. Yes, that's right. That we discussed na akushalas. Nivarnas are akushala mental factors. They are mental factors. When they are present in Chitta, then Chitta becomes akushala. You have seen, no? Kamachanda was Lobha, Vyapada was Dosha, Thilmiddam was anyway present there also in our mental factors जो हमने बनाए थे उनके सारे थे. All of them we had seen. So if you see the slides that is given there, how they are. He's asking what sections describe Kushla Chitta. What sections in the Satipatthana Sutta describe Kushla Chitta? They don't describe it. They identify the presence of it. Chittanupashna है, talks about Sairagam va Chittam, so Kushla Chitta हो गया. Vitaragam va Chittam, Kushal हो गया. So they keep on fluctuating. Sadosham va Chittam, Vidadosham va Chittam, Samoham va Chittam, Vidamoham va Chittam. Mahadgatam भी है उसमें. Mahadgatam va Chittam, ये जो these jhanic Chittas, Amahadgatam va Chittam, so sensuous Chittas. So in that way, so they are present in a क्या कहना चाहिए, in a seed form. All the ideas are present in Cittas. So that seed has been properly
sprouted and put down clearly in the Abhidhamma. Most everything which is in Abhidhamma you can find in Cittas in a very seed form, and not so care is not taken in making it exact. जैसे 5 ध्यान कर दिए उसमें 4 ही रखते हैं, जबकि एक्सपीरियंस यही होता है कि वितर्क पहले ही आएगा, विचार बाद में आएगा. This is our experience. So whatever experience is there, that has been put down in the Abhidhamma more clearly. Any other questions from anybody? No questions. Thank you very much.